Dear students, good morning. Welcome online study today. Today you have to study present continuous tense and we are going to discuss on this topic that in present verb or action is in progress. On some places for future fixed plans we use present continuous. In that position it is called progressive present. Now I will show you the subject matter, making you understand. You have to focus on this matter and carefully you have to listen the words from me. Okay students, प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में निरंतर चल रही, लगातार चल रही क्रियाओं के लिए किया जाता है और फ्यूचर के, भविष्य के फिक्स प्रोग्राम के लिए भी प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी टुमारो. कल हम एक पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं, इस तरीके से. लेकिन अभी सिंपली बेसिक स्टडी करते हुए स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स की आप इस टेंस के या इस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस का निर्माण करना सीखिए. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर यू. Recognition in present verb or action is in progress. It means action is going on. Active voice, affirmative. The structure of affirmative: subject plus is plus V1 plus ing plus object etc. As वह एक पत्र लिख रहा है, इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट एक पत्र ऑब्जेक्ट लिख रहा है, वर्ब है. और सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा ही इज राइटिंग ए लेटर. नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा. एज ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर. आई फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चन. एजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क. एज इज ही राइटिंग ए लेटर. इंटरोगेटिव सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस एजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क. एज वाई इज ही राइटिंग ए लेटर. नाउ पैसिव वॉइस: object into subject, helping verb is am, are plus being, v1 into v3, preposition by etc, subject into object. As he is writing a letter, in this sentence he is subject, a letter is object, writing is v, or here is p. P for passive voice. A letter is being written by him. Now you have to see how you can use the sentences of present continuous tense in your speaking or spoken English. First of all, you should take interrogative first, yes no type question. Question number 1: are the boys making a noise in the class? Response number 1, positive, in short, yes they are. Response number 2, positive, full response, yes they are making a noise in the class. Response number 3, negative short, no they aren't. Response number 4, negative, full response, no they aren't making a noise in the class. Now next question: is Ravi going to Ajmer?
Response number 1, yes, he is. Response number 2, yes, he is going there. Response number 3, negative short, no, he isn't. Response number 4, no, he isn't going there. Next question, are you preparing for exam? Response number 1, yes, I am. Response number 2, yes, I am preparing for it. Response number 3, no, I am not. Response number 4, no, I am not preparing for it. Interrogative second, WH type question. Question number 1, what are you doing? Response, I am watering the plants. Next question, when is Reena coming here? Response, she is coming here on Monday. In this way, in interrogative second, there is only one response for one question. Okay? Now, practice table number 5. Here is a table, and these are 12 subjects. With singular subject is helping verb with I, am, and with you, we, and plural subjects are helping verb. And here are 12 predicates, verb plus ing plus object, etc. And with the help of this table, you have to create 144 sentences. Okay, students? How? This way. He is writing stories, वह कहानियाँ लिख रहा है. He is cooking food, वह खाना पका रहा है. He is washing clothes, वो कपड़ा धो रहा है. He is cleaning the pots, वो बर्तन धो रहा है. He is cutting dry grass, वो सूखी घास काट रहा है. He is milking the cows, वो गायों का दूध दुह रहा है. He is plowing the field, वो खेत जोत रहा है. He is working hard, वो कठोर परिश्रम कर रहा है. He is running on the road, वो सड़क पर दौड़ रहा है. He is sweeping the hall, वो हॉल में झाड़ू लगा रहा है. He is wasting time and money, वह समय और पैसा बर्बाद कर रहा है. He is watching birds, वो पक्षियों को देख रहा है. In this way, you have to create 144 sentences at your home. Okay, students, bye bye. See you soon.